लगता है पहाड़ों पे ड्राइविंग 100% सेफ है कि नहीं? नहीं, सेफ नहीं है। सेफ नहीं है तो क्यों ऐसा, मतलब सेफ क्यों नहीं है? तो ऊपर नीचे खाई है, रेलिंग नहीं है, लाइटें नहीं है, इसलिए 100% सेफ नहीं है। कई वो पता नहीं चलते हैं जो आगे से गाड़ी आ रहे हैं, क्रॉस करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलते हैं, सिंगल वे रोड होते हैं, इसीलिए सेफ नहीं है। बरसात के टाइम में फिसलन होती है। बरसातों के समय में फिसलन भी होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सब एक्सीडेंट को रोकने के लिए क्या सुधार ला सकते हैं पहाड़ को रोकने के लिए पहाड़ों पे रेलिंग लगाया जाए, लाइटों की व्यवस्था किया जाए, तो ऐसा चीज़ हो गाड़ी में ऑटोमेटिक स्पीड डाउन हो जाए। कोई सामने से कोई चीज़ आ रहा है तो हमें स्पीड डाउन हो जाए गाड़ी में, जिससे उनकी एक्सीडेंट ना हो। सूरज, तुझे ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने एक अच्छा आइडिया दे दिया हमें? हाँ, कुछ ऐसा सिस्टम कि जिससे गाड़ी की स्पीड अपने आप स्लो डाउन हो जाए, और ऐसा तो कोई सिस्टम भी नहीं आया अभी तक। हाँ, हम ऐसा कुछ फोर्स जनरेट कर सकते हैं जिससे गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाए और एक स्पीड से ज़्यादा जा ही ना पाए। चल इसके बारे में कुछ सोचते हैं। कुछ बनाते हैं, चलो। चल। Mountains are the beginning and end of all natural sceneries, but the sceneries can become unpleasant due to various constructional defects. The roads on the mountain are constructed thin and the turnings are sharp, due to which it becomes an accident-prone area. According to our model, car A is coming from the right side of the mountain and car B is coming from the left side of the mountain. Here, mountain becomes the blind spot as car A cannot see car B and vice versa. Now, what could be the consequences of this fender bender? Firstly, car A could have a great collision with car B. Secondly, car A could lose its balance and could break these security fences and fall into the ditch. Or luckily, both car A and B passes through each other smoothly. But luck won't work every time, so we have taken out a solution for it, the contingency diminution, that is accident minimizer. We have used ultrasonic sensor, I2C LCD, an indicator LED, small breadboard for distribution of power, jumper wire for some connections. We have also used a solenoid under the road. This whole process is controlled by the controlling unit Arduino Uno, which will be powered by the power bank, and the solenoid will be powered by LiPo battery. Now we will show you the working of this model. Let us consider car A coming from the right side of the mountain and car B coming from the left side of the mountain. So we have used ultrasonic sensor to calculate the distance and speed of car A, which will be displayed to the other side of the road on the LCD screen. If any car exceeds the speed limit, the LED indicator will turn on. Also, the solenoid will get activated. The solenoid will attract the magnetic core, which will be placed under the car and will be covered by the insulating surface, which will prevent the whole car from getting magnetized. So as soon as the solenoid will get activated, there will be a force of attraction between the solenoid and the car, which will attract the car towards the ground and reduces the speed gradually. So we hope that this idea would be implemented in near future, which will prevent accidents on hilly areas. Thank you.